In the field of defense, France is a steadfast partner of Make in India. Our high-level cooperation allows us to develop next-generation engines, multi-role helicopters, advanced combat aircraft, submarines, etc., etc. And I want to thank you warmly for the extraordinary confidence you've placed in this partnership. And this is not just a defense contract, and a series of defense contracts. We speak about what a sovereign alliance is. Two great nations choosing each other on land, at sea, and in the sky, not by default, but by conviction. India is no longer negotiating just to buy fighter jets. It is negotiating to build them. During the 6th Annual Defence Dialogue in Bengaluru, Defence Minister Rajnath Singh sat across the table from French Defence Minister Catherine Vautrin with a clear message. If India moves ahead with the next Rafale deal, it wants maximum local content. The two countries renewed their defence cooperation agreement for another 10 years. They signed a pact to manufacture French-origin missiles in India. They also agreed on reciprocal deployment of army officers. But the headline issue was the proposed purchase of 114 Rafale fighter jets. The Defence Acquisition Council has cleared military hardware worth 3.6 lakh crores. This includes the Rafale package. The plan is simple on paper. 18 jets will come in flyaway condition, 96 will be built in India. But New Delhi wants more than licensed assembly. India is pushing for 50 to 60% indigenous content in the jets manufactured locally. That means Indian components, Indian systems, integration of Indian weapons, and adjustments for India-specific operational needs. Officials say discussions are centered on localization, technology transfer, and deeper industrial partnership. India wants its private and public sector companies to be embedded in the supply chain. जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन्स हैं उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं, और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और हम दोनों ही जो है वह जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसमें विश्वास करते हैं। आपने रक्षा क्षेत्र की भी बात करी, मैंने भी उसके बारे में कहा, लेकिन कई ऐसे और भी और क्षेत्र हैं जिसमें हमारी जो सोच है वो साझा सोच है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र क्यों ना हो। और इस क्षेत्र में कई सालों से हमारा जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हुए हैं, वो आगे बहुत मजबूत हुए हैं। और इसीलिए जुलाई में जो फ्रांस में एक शिखर सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसमें हमने भारत को भी निमंत्रण दिया है। और चाहे वो सिविल न्यूक्लियर का क्षेत्र हो, उसमें भी चाहे जाता पर हो, चाहे एसएमई हो, हमने इन सभी परियोजनाओं में भारत का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और हम एक कॉमन रोड मैप के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ताकि अगर जो वैश्विक जो चुनौतियां उनका सामने करने के लिए, ताकि हम एक रास्ता निकालें विश्व के लिए जो हेजेमनी से काफी अलग हो। The deal is still some distance away. After the acceptance of necessity, the process moves to tendering, technical evaluation, cost negotiation, and final approval by the Cabinet Committee on Security. Each stage will take time. Yet the political signal is already strong. India is reshaping its defense partnerships. It is insisting on co-development and co-production. It is aligning big-ticket imports with the Make in India push. This broader shift is visible elsewhere too. DRDO has expanded cooperation with France's Defense Research Establishment in areas such as artificial intelligence, advanced propulsion, and cybersecurity. Bharat Electronics Limited has partnered with Safran to manufacture Hammer precision-guided munitions in India. These weapons are already integrated on Indian Air Force Rafales.